if the others don't come. Sprichwörter, Sir, besser, ich habe auch nicht so gut vorbereitet über das Thema. Ein bisschen, ich könnte sagen. Anjali, eigentlich brauchen wir keine Vorbereitung. Yes, Sir. But now, manchmal, ich gebe 30 Minuten und dann ich spreche. Schlechte gestern. Ich würde meinen, ohne Vorbereitung aus dem Stegreif sprechen. So when you say aus dem Stegreif sprechen, you just speak out of without preparation, ohne Vorbereitung sprechen. Ja, ganz spontan sprechen. Maza tabat. Because you are challenging yourself to recall what all German you knew. उसमें मजा आता है. That's good, actually. Ja. Also könnt ihr beide meinen Screen sehen? Mein Bildschirm? Yes, sir. Okay, so let's start with this Proverbs. Maybe इसके बाद देखते हैं, अगर नहीं आए तो रोक देंगे. 5a. Es gibt hier diese Sprichwörter. 1, 2, 3, 4, 5. Und auf der rechten Seite A, B, C, D, E. Also wir sollten diese Sprichwörter kombinieren, und zwar richtig, damit wir das ganze Sprichwort haben. So, which ones fit together? Nummer 1 ist das A, B, C, D oder E. Sir, number 2 is mit A by Mason. Der Appetit kommt, ja? By Mason. Bei Messen, also mit E, ja, richtig. Sehr gut. Hunger ist der beste Koch. Das ist auch sehr gut. Gut gemacht. Hunger ist der beste Koch. Also 3a. Was ist dann das hier? Viele Köche. Der Koch, die Köche. Ja, Shashank. Morgen. Doch. Ich habe eine Nachricht geschrieben. Ich bin schon da im Zimmer. Anjali und Babita sind auch hier. Und wir haben mit dem Unterricht angefangen. तो कहाँ पर हो भाई? अभी आ जाओ फिर से. आ जाओ, लॉग इन कर लो. Okay. So, der Shashank kommt. Okay. Ja, viele Köche. Many cooks. Many cooks. Hint, I'll give you a hint. Verb in second place, plural. Verderben. Ja, ist richtig. Verderben den Brei. Verderben den Brei. Ja? Many cooks, they spoil the broth. In English sagt man. Many cooks spoil the broth. Also wir werden das erklären. Zunächst kombinieren wir. Also Shashank ist gerade da. Der hat hier gewartet, hat er gesagt. Da ist er. Morgen, Shashank. Guten Morgen. Ja, also wie viel Uhr bist du denn hierher gekommen? कितने बजे आए? Wir haben gestern gesagt, ne, 9 Uhr etwa, und das habe ich dann auch bestätigt am Abend. शाम को मैंने मैसेज भी भेजा था 9 Uhr. हाँ, वो एक्चुअली हुआ ये कि मैंने मॉर्गन को मोंटाग पढ़ लिया गलती से, वो थोड़ा सा जल्दी में. ठीक. यार वो ऐसी गलती गलती से करोगे हो तो गया. ऐसी गलती करोगे तो वापस मैसेज देखा कि आप वेटिंग कर रहे हो, तो फिर मैंने वापस पढ़ा. एक्चुअली बात ये हो रही थी ना कि
कल रखेंगे तो सही, बट शायद हो जाए तो 9 बजे मैं नॉर्मली क्लास मिस नहीं करता हूँ मैं नॉर्मली। वो आगे जाके ऐसी गलती मत करना, जर्मनी की फ्लाइट छूट जाएगी। नहीं। Okay, so wir sind gerade dabei, etwas zu lernen, damit die Zeit nicht verloren geht, ताकि टाइम वेस्ट ना हो जाए। Und wir machen einige Sprichwörter im Buch, ये उसी लेसन में है। So, viele Köche verderben den Brei. Okay. Essen und Trinken hält, Verb already है। B. Lieb und Seele zusammen. Ja, Leib und Seele Lieb. zusammen. Leib und Leib. Leib. Ja, Leib und Seele zusammen. Und das Auge, Bei Messen. nein, Ist mit. ist mit. Das Auge ist mit. Okay, Verb. 1 C, 2 E, 3 A, 4 B, 5 D. So ist das. Und jetzt das Interessanteste. Das Auge ist mit, der Appetit kommt beim Essen, Hunger ist der beste Koch, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen, viele Köche verderben den Brei. अब इनका मीनिंग क्या है? इनमें बता सकते हो इनकी मीनिंग्स क्या है? ये मीनिंग्स है इसी प्रोवर्ब्स की। Für das Wohlbefinden ist es wichtig, gut zu essen und zu trinken. Wohlbefinden, good health. सेहत बरकरार रखने के लिए अच्छा खाना और अच्छा पीना चाहिए। Wenn man sehr hungrig ist, schmeckt das Essen. Hunger is their best cook. So, well done. So number 3 हो गया ये, है ना? Hunger ist der beste Koch bedeutet, wenn man sehr hungrig ist, schmeckt das Essen. Man isst eine Speise besonders gern, wenn sie schön aussieht. Das Auge. Das Auge Das Auge ist ist mit. Ist mit. Okay. Wenn zu viele Personen bei etwas mitentscheiden wollen, kann das Ergebnis nicht gut werden. Viele Koche. Köche, ja. Verderben den Brei. Shabash. So, this is number 5. Ja. Okay. Man muss beginnen, etwas zu tun. Nach einer Weile macht man es dann auch gern. दो बच गए हैं। Der Appetit kommt. Ja, beim Essen. Das ist richtig, Babita. Der Appetit kommt beim Essen. And the first one, für das Wohlbefinden. Essen und Trinken hält. Hält. Ja, hält Leib und Seele zusammen. Ja, Leib und Seele zusammen. Okay. Now let's look at individual words, damit wir das auch ein bisschen näher verstehen können. Näher verstehen können. Also das ist ein Komparativ, näher von nach, näher, nächste. Und näher hier bedeutet थोड़े और नजदीक से समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ी बारीकियां देखते हैं इसमें, right? To go into a little more detail. So when you say das Auge ist mit, if you like what you see, तो automatically appetite बनता है. So when you serve food or when you prepare food, the appearance of the food is very important. Und das wissen alle Mütter, die zu Hause kochen. So उसमें the more vegetables you put, the more colorful that dish appears to be. Mixed veg curry, for example.
हरा है, उसमें लाल है, थोड़ा ऑरेंज कलर है, लाल मतलब बीटरूट डाल दिया, या फिर ऑरेंज के लिए थोड़े गाजर डाल दिए, हरी पत्ती डाल दी, एक आलू डाल दिया उसमें, वो लाइट येलो हो गया. सो दैट मिक्स वेज करी, all these colors, it looks very appetizing. So das Auge ist mit, the food has to look good. Taste तो दूर की बात है, हो सकता है नमक भूल गया और खाते ही थूक दिया लोगों ने, das ist eine andere Sache. Aber wenn das gut aussieht, dann hat man Lust, dieses Gericht zu essen. कोई और आया है, I think. नहीं. Doch, good. Shashank. Oh, Shashank. I thought there was a bing. Okay, so right, their appetite kommt beim Essen. Also wenn man beginnt mit dem Essen, wächst auch der Appetit. Then the appetite also starts growing. We have this very often, small children, auch wir, als wir Kinder waren, haben oft gesagt, मुझे भूख नहीं है, ich habe keinen Hunger, मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है. So what do the mothers do at that time? In the first place, the food is so beautifully prepared and looks so good. They just say, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा ले लो, अभी बाकी मत खाना, बाद में खा लेना, अभी थोड़ा सा तो ले लो. And they put the food in front. Since there's a compromise here, ein bisschen kannst du schon essen. वो थोड़ा खा लिया तो अच्छा लगता है, थोड़ा और ले लो, हाँ ले लो, जितना चाहिए ले लो. Also the appetite kommt beim Essen. So the meaning here, काम तो शुरू करो पहले, काम शुरू करो भाई, but after some time अच्छा लगने लगेगा. So nach einer Weile, after a while, after some time, macht man es dann auch gern. Then one would like to do it also. Und hier zum Beispiel, Hunger ist der beste Koch. भूख लगती है ना, तो जली हुई चीज भी खा लोगे. Ja, wenn man sehr hungrig ist, schmeckt jedes Essen. Es gibt auch ein Hindi-Proverb, ne? भूख लगने पे शेर भी घास खाता है or something. भूख लगी हो ना तो कुछ भी खा लोगे. Same thing, right? If you are desperate for some work, नौकरी कहीं मिल नहीं रही है, और किसी ने कहा देख भैया पूरे घर का झाड़ू पोंछा कर दो, 15 कमरे हैं, झाड़ू पोंछा कर दे, 10 रुपए दूंगा. Normally you would even not even do that. लेकिन something is better than nothing. कुछ तो मिल रहा है, 10 रुपए तो मिल रहे हैं, 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, कुछ तो मिल रहा है. So when you are desperate for something, you will accept it. Similarly, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Das Leib, body, die Seele, the soul. So your body and soul, if you eat well, both your body will be healthy and your soul also will be healthy. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? अगर अपने आप को हेल्दी महसूस करना है, अच्छा खाना पीना होना चाहिए. Healthy food, should be eating healthy food. To get into a good mood, to be healthy, to be able to move around. So für das Wohlbefinden, to feel healthy, to feel good. Similar to good food. Similarly for a mind also, if you want to keep your mind healthy, कुछ ना कुछ काम करते रहो. Don't keep an empty mind. Because if you have an empty mind, पता नहीं कौन कौन से ख्याल आते हैं उसमें. यहाँ से खाली दिमाग शैतान का घर होता है. Genau. So ist das hier. Wenn man was tut,
Also das Gehirn, die Gedanken sind da, man arbeitet ein bisschen psychisch auch. Dann ist alles in Ordnung. Und viele Kirche verderben den Brei. Too many cooks. Verderben ist किसी चीज को खराब कर देना. For example, das Brot verdirbt. Verderben, verdarb, verdorben. EAO. Verderben, verdarb, verdorben. मतलब खराब हो जाना. ब्रेड को अगर खुले में छोड़ दोगे 3 दिन बाद उस पे वो लग जाता फंगस, है ना? Yeah. So that is that verb here, verderben. खराब हो जाना. So too many cooks spoil the broth. If there are too many cooks in the kitchen, जो खाना बना रहे हो सब मिला के, अगर वो simple broth मतलब boiled vegetable, तो उसको भी खराब कर देगा. Yeah. सब अपना अपना दिमाग लगाते. Totally. Das passiert bei mir sehr oft in der Küche. Immer wenn ich koche, kommt meine Frau auch. Und sie will mal sehen, was ich koche. अच्छा तुमने उसमें वो हल्दी डाल दी? डाल दूंगा. हल्दी तो पहले डालते. डाल दूंगा. रुक जाओ ना, मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ. नहीं ऐसे नहीं होता. हल्दी डालनी होती है. ठीक है. The next thing you know, जो मैं भून रहा हूँ वो तो भुना नहीं. हल्दी डाल दी, नमक डाल दिया, मिर्च डाल दिया, वो क्या बोलते हैं, गरम मसाला डाल दिया. हाँ, अब बनाओ. अब इतना कुछ तो तुमने कर ही दिया, तो मैं क्या बनाऊं? Too many cooks spoil the broth. So you should never have too many people working on the same thing. Und das ist auch hier. Wenn so viele Personen bei etwas mitentscheiden wollen. Entscheiden, to decide, ne? Decide, correct. Ja, entscheiden, entschieden. Entschieden. Kann das Ergebnis nicht gut werden. Then the result is never good. Und auch in unserem Leben, echt nicht. Entschuldigung. Yes. पकड़ लिया. दूध आ गया था ऊपर. So after coming home मैंने दूध चढ़ाया था. So अभी हो गया था. Around 9 o'clock. Oh, good. So, wenn viele Leute etwas entschieden, wenn viele Leute uns etwas empfehlen, wenn wir zu viel Ratschläge bekommen, dann ist es schwer. So never take advice from lots of people. Because final decision you have to take. You are the one who's going to act. कुछ सुनो, बहुत कुछ सुन के अनसुना कर दो उसको. Don't let people influence you too much. Then das Ergebnis kann nicht gut werden. Okay? So we'll be doing some more proverbs as we go along. Und mal sehen, ob wir dann, wie viele wir im Kopf am Ende behalten können. कितने लोग हैं अभी? Anybody else is coming? नहीं आए, सब छुट्टी लेके बैठे हैं. शशांक is the only one who's very keen. बेचारा 2 बार आके गया. Hey, Shashank. Yeah, sir. If you enter this room through that link, ना, फिर मेरे परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम लोगों को. नहीं पड़ती है ना. Link नहीं पड़ेगी. We enter with link only, sir.
वो HTTPS and so on वो गूगल लिंक के थ्रू आना होता है। हाँ, आपने जो व्हाट्सएप पे दिया था ना उससे ही आता है। सर एक बार पढ़ती है, बाद में नहीं पढ़ती, स्टार्टिंग में। नहीं, स्टार्टिंग में भी नहीं पढ़ना चाहिए बबीता, स्टार्टिंग में भी नहीं होना चाहिए। लेट मी जस्ट चेक विथ देव ऐसे, because in the other batch they come in directly without my having to give permission or without you having to wait, वो अंदर आ जाते हैं सर। चलो देखता हूँ मैं इसे कैसे कर सकते हैं। So yes, what shall we do? Shall we go on थोड़ी देर के लिए या बंद कर दें अभी? We evolved। सर कुछ अलग पढ़ाइए आज, चलो स्पेशल। yeah, या hobbies, ओके। Freizeit, Hobbies, was macht ihr gerne? Also das sind Hobbys in Deutschland. Mit der Familie spazieren gehen. ये कौन सा गेम खेल रहे हैं? आइस स्केटिंग ये वाला। नहीं, अच्छा इधर हम्म? पोकर। No, पोकर ताश का गेम होता है। Something with T. It started with T maybe. Nine. This is a board game. कैरम बोर्ड। ना I have this game when I was kid. I just forget that name. this game is backgammon. पोकर किसके यहाँ चल रहा है? शशांक। शशांक के यहाँ। मैं तो शांति से बैठा हूँ। शांत क्या चल रहा है पोकर? क्या डाला भैया उसमें? बैकग्राउंड में आवाजें आ रही हैं। हाँ, इसका नहीं श्योर। क्या पक रहा है? फास्ट फूड। नहीं, बन जाए तो आज मजा हो जाए। also खिचड़ी vielleicht, ना? Das ist fast food. खिचड़ी is fast food. नहीं कुछ नहीं, मैं शांति से बैठा हूँ दूसरे रूम में। तो फिर आवाज क्यों आई यार? कुकर वाली आवाज आई थी अभी। ये शायद एयर प्लग्स की वजह से आ रही है। बिरयानी शायद। Also man spielt hier Backgammon. This game is called Backgammon, and people play this in bars in Deutschland. खूब खेलते हैं। Ja, man sieht hier ein Glas Bier auch. Man bestellt das Bier, trinkt Bier, and they play this game. It's a very, very popular board game. और ये, what do you call this here, German? इसकी नहीं, this is not skiing. स्केटिंग। Skating. Goat ice skating. इसको इस पे नाम दिया हुआ इसके हिसाब से। What is this here? स्केट्स। हाँ, skates. हाँ। हिंदी में कोई नाम है इसका? चलने वाले जूते। वो तो फिर चलने वाले में तो पहिए लगे होंगे। हाँ, व्हील्स होना चाहिए। हाँ, तो अगर व्हील वाले जूते हो तो उनको कैसे क्या कहेंगे? रोलर स्केट्स। वेल डन। जर्मन में बोलो। जूते को क्या कहते हैं? शू है। Schuhe। और वो पहिए वाले? रेडर नहीं, जो घूमता है उसको क्या कहते हैं? अब भी बताया था तुमने इंग्लिश में। रोलर। हाँ, आधा वर्ड ले लो, पीछे वाला हिस्सा छोड़ दो। रो शू। रोल शू। And this is here Schlittschuhe. Habt ihr das mal versucht, Rollschuhe? Yes, sir. Ja, kannst du das gut machen? Yes, sir. Oh, Ich wow. spiele für meine Schule auch bis State Level. Skating? Yes, sir. Roller Nicht skates? Skating, ja, aber Rollerschuhe. Und mein Very Kind skate- auch.
Yeah. क्या वही रोलर स्केटिंग ना? Yes, sir. अरे वाह अंजलि, ब्यूटीफुल, वेल डन. Hmm. Babita and Shashank. 9 sir. निष्कान्नेश Bhai, I don't want to. I can tell you half the truth. I can do skating on one leg. दोनों पाँव पे नहीं होता मेरा. Huh? हाँ, एक पैर पे रोलर ब्लेड्स और या ये रोलर स्केट्स बांध के मैं कर लूंगा एक टांग पे. दूसरी टांग पे करता हूँ तो देन both my feet have a mind of their own. एक जापान Right. जाता है, एक इंग्लैंड जाता है. Yes. Actually, there is a trick, na, to hold them together and go parallel, Parallel. and you have to go in this manner, nahi? So You have to be little downwards and then it's yeah, better. yeah. Balance. थोड़ा Yeah. झुक के bend your knees and then go Yes. alternate. एक इधर diagonal and then दूसरा diagonal. Hmm. या कोशिश की थी, but those roller skates, they were actually very frictionless. Huh. I bought them for my daughter. Hmm. She was a very good skater. Mine Roller- came down, sir. Yeah. Auch Spielfür State, so in Pune, and topped auch. So Oh, by wonderful. Gratulation, gratulation. Is it inline skates ki wo Nein, sir, I also used a quad and mine came out quad. Aber Okay. hat das waren 5 Jahre alt war. als 5 Jahre Als, alt. correct, Okay. als. So we were in Pune and went for an championship. So that's Also the meine Tochter hat das nicht gemacht, also ein Wettbewerb, Competition. An einem Wettbewerb hat sie nicht teilgenommen. Sie hat hier alles im Campus selbst gelernt. Everything she learned herself. So she just said, I wanted, मैंने कहा ठीक है मेरे वाले ले ले. I had bought them for myself, but I never did. correct. So उसको दे दिए, the quads. Then she took the inline. Inline चाहिए, मैंने कहा ठीक है inline ले ले. So I bought her the inline skates. And she would wear the inline skates और वो सीढ़ियाँ उतर जाती थी. It's quite Yeah. tough. Yes, schwer. Yeah, I don't. She would go down very easily down the steps. And I used to tell her, थोड़ा पकड़ लेना banister को हाथ में. हाँ, okay, okay. And next thing I know, she just cut. पहुंच गई नीचे. So it's not good. I used to be ready. अब गिरी कि कब गिरी. Aber dann hat sie dann so mit Selbstvertrauen gemacht. And then she would go skating on the campus. Wir haben einen ganz kleinen Campus hier. Und das war auch gut. Alles selbst gelernt. Das ist sehr, sehr populär im Winter. Ja, Schlittschuh fahren. इसको Schlittschuh कहते हैं. Schlittschuh. SCHLITT. Schlittschuh fahren. And this is the other hobby, which many of us have. Essen, chatten, schlafen. So this is inside the restaurant. As you can see, the restaurant itself is a very, very posh looking thing. But their things are not very costly. Maybe a little more, but not very costly. So man trinkt ein Glas Wein oder ein Glas Bier, man isst etwas, man macht Unterhaltung, unterhält sich mit Freunden, mit der Familie manchmal. Und da kann man dann so lange sitzen, wie man will. कोई भगाता नहीं है. Just sit as long as you want to. So this is again Freizeit. Viel Spaß. Freizeit. क्या करो? टाइम है बिताओ. ये दूसरा हॉबी नया शुरू हो गया. ये तो अपने पास भी है अभी. ये कौन सी एक्सरसाइज है? Zumba, dancing. No, it's yeah, kind of dance. But what do you call this sport? It's a sport. ये फिल्में नहीं देखते क्या तुम लोग?
शशांक, देखते हैं सर। ये कौन सी कुंफू फिल्म टाइप है? लग रहा है थोड़ा। ये कौन सी चाइनीज टाइप लग रहा है ये। कुंफू या चाइनीज समथिंग, टाइप या? तो क्या नाम है इसका? कुनफू। कराटे और कुंफू। नहीं, इट्स नॉट कुंग फू। नाइन, मार्शल आर्ट्स। yes, something with martial arts, das ist richtig. जूडो। नहीं, जूडो में ये सब नहीं होता है। कराटे। कराटे सिर्फ हाथ से करते हैं, हम्म, इसमें पैर इस्तेमाल नहीं करते कराटे में। दिस इज टाई ची, ताई ची। सुना है ना? हम्म, या दिस इज टाई ची। ये हाल ही में काफी फेमस हो गया था जर्मनी में, अभी भी है। Und das ist in einem chinesischen Tempel. It's in a Chinese temple somewhere in Germany. How do I know it's a Chinese temple? ये इसका, पीछे। हाँ, ये बैकग्राउंड, इसके आकार देखो, ये डिजाइन दिख रहा है ना यहाँ पे, या एंड ये वाला, ये टिपिकली चाइनीज है। एक वो, दूसरा ये पिलर, ये देखो, दिस इज द चाइनीज स्टाइल। सो व्हेन यू लुक एट दिस आर्किटेक्चर, अंदाजा लगा सकते हैं ये जर्मन तो नहीं हो सकता, ये थोड़ा चाइनीज स्टाइल दिख रहा है। या आदमियों की शक्ल से भी पता लग रहा है सर ये चाइनीज है। चाइनीज तो है, लेकिन इसमें यूरोपियंस भी काफी इंटरेस्टेड है। बेसिकली इट इज अ फिजिकल एक्सरसाइज विद ब्रीदिंग। योगा में हम एक जगह बैठ के करते हैं, हम्म, इसमें ये लोग हाथ पांव भी चलाते हैं। हम लोग ब्रीदिंग करते हैं अलग अलग आसन करके, योगा। अब ये लोग, इन लोगों का जो योग आसन है, इसमें ये मूवमेंट के साथ है, ये हाथ पांव पूरे, दे हैव टू मूव द होल बॉडी। Yoga is also very, very popular in Germany now as fright site. They have realized that है काम की चीज है ये, और ये तो मालूम ही है। रग्बी, हाँ, बेसबॉल। बेसबॉल, बेसबॉल। ओके। ये राउंड बैट होता है, ये जो बैट्समैन एक ही होता है यहाँ पे, और from around 90 feet there's a person who throws the ball. जैसे ये वाइट बॉल है ना, ये फेंकता है इसकी तरफ। If he misses it, ये पकड़ लेगा पीछे, ये इसके पीछे अंपायर है, ठीक है? तो अब ये जो फेंकता है, the umpire decides whether the throw was proper or not proper. So if it is proper and the batsman misses it 3 times, इसका मतलब आउट, ये आउट हो गया, फिर नया बैट्समैन आएगा। और मान लो इसने बॉल को छू लिया, देन ही हैज टू रन अराउंड द स्क्वायर। एक छोटा स्क्वायर होता है डायमंड शेप का, उसको बनाते हैं टेढ़ा करके। इट्स नॉट इन दिस मैनर, इट्स लाइक दिस। तो इस पॉइंट से दूसरे स्क्वायर के दूसरे कोने तक इसको भागना होता है बिफोर दिस पर्सन कैन पिक अप द बॉल एंड थ्रो इट। So this is an American game basically. और ये क्या लास्ट ओपेरा, opera. But this is actually a concert. Opera नहीं है, ये concert है, as you can see. musicians. The Musiker sitzen hier, das Orchester sitzt hier. The orchestra is sitting here. और यहाँ पे ये वायलेंस है सब, इनका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे रहेगा और किस ऑर्डर में वो बजेगा। सो यू हैव दी वायलेंस हियर। सबसे पहले ये शुरू करेंगे, दिस आर कॉल्ड द फर्स्ट वायलेंस। उसके बाद ये वाले, उसके बाद प्ले करेंगे, दिस विल बी द सेकंड वायलेंस। फिर बाकी इंस्ट्रूमेंट धीरे धीरे आते हैं। तो इससे क्या हुआ, ये पहला जो वायलिन बजाने वाले जो पहला वो धुन शुरू करते हैं, दे आर कॉल्ड ऑफ डॉइच the erste Geiger spielen. The word is Geiger, G-E-I-G-E. So ये music से ये Wendung, this idiomatic phrase, has come into language. So auf Deutsch sagt man, er will immer die erste Geiger spielen. जब देखो आगे बड़े चले आता कि भाई मैं करूँगा. So er will immer die erste Geiger spielen. He always wants to be the first one to do everything. आता जाता है नहीं कुछ. So in that sense,
Erster Geigerspiel. And this is an organ. It's a huge organ. Pipes हैं इसमें. ये सब pipes हैं. हवा से साउंड आती है इसमें और नीचे पेडल दबाया जाता है तो हवा निकल इसमें जाती है. And the keyboard is like a piano. पियानो के कीबोर्ड टाइप बजाया जाता है और इसमें से आवाज एकदम चर्च में होता है नॉर्मली. दिस इज एन ऑर्गल. दी ऑर्गल. So hier sind die Geigen, es gibt auch Trommeln und Saxophone und ein Viola gibt es auch hier irgendwo. Oh yeah, this is a viola. It's a big violin. Und das ist ein Klavier, Piano. और इसके सामने एक छोटा सा स्टूल, Klavierstuhl. And das ist das. ये कौन हो गया? Publicum. ऑडियंस. Audience. Yeah? Public कह सकते हो, but what would be the correct word? रेडियो सुनने वाले को क्या कहते हैं? योरर. Zuhörer. Zuhörer. हिंदी में क्या कहते हैं? श्रोता. What is श्रोता? सुनने वाला. You know the word श्रुति? श्रुति? या. कान ना? श्रुति तो लड़की का भी नाम होता है. Right? So from there श्रोता सुनने वाला. So auf Deutsch Zuhörer. अगर वो एक बार बिल्ड व्योटर बुक देखोगे ना सब मिल जाएगा तुम्हें इसमें. Were you able to download it yesterday? Build व्योटर बुक. आपके पास डाउनलोडिंग क्यों है? 9. या. Yeah, okay. So have a look at the sports activities. Habt ihr noch Fragen oder irgendwelche Fragen और कोई questions वगैरह? Any doubts, any questions? To do anything different is not, I don't want to be unfair to the others. Correct. कुछ नया तुमने कहा था बबीता करने के लिए. I wanted to, but बाकी मिस नहीं कर कुछ स्पेशल. वो मिस कर जाते हैं ना बेटा. They would feel bad. Correct. कि सर हमको फिर से करा दो, मिस कर गए. तो I did not want that feeling कि सर ने देखो हमारे गैर हाजिरी का फायदा उठाया. तो वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए. We should be doing things together. इसलिए I wanted to stay with something जो वो लोग easily रिवाइज कर सके. वो स्पेशल वाला रिवाइज नहीं हो पाता उनसे. Sir, in ये जो Überschriften we give ना, the themas, Yeah. that is ein bisschen schwer für mich. इसी chapter में we have one exercise for chocolates, correct? So we have 4 paragraphs in that and we have to give the Überschriften, the title. Ich habe das gelesen, aber ich bin nicht sicher, was wir können Überschriften geben. Sie können Sie Welche Überschriften? Aha. Seite Nummer 42 unserer Lehrerbuch. Yeah. Where is the problem? You have to understand the text first. Yes, sir, I have understand it. Okay, the text is about the chocolates, how it is made, and the content of it. So, according to me, ich denke, vielleicht Zutat verraten. Oder Zutaten leckere Schokolade. Aber das ist richtig oder nicht? In exam also, I have this problem. When you have to give the title Yeah. or to choose it, my answer 80% is wrong. Okay. Number one, I would simply say Schokoladen
oder Zutaten der Schokolade. Text number 1 का. Okay. Text number 2 का Schokoladen oder Schokolade ist gesundheitlich. Okay. Ich schreibe Schokoladewirkung. Effects. Nee, number 2 is gesundheitlich. It's healthy, which is very true, by the way. It's a health food. And this is an emergency food. Please note it. मान लो कभी तुम लोग जर्मनी गए हो, खाना उस दिन मिला नहीं किसी वजह से, हॉस्टल में या any other place, you're not able to get hold of some food, you're not able to eat, go to the railway station of that town. वहाँ पे एक फूड डिस्पेंसिंग मशीन 24/7 चलता रहेगा. Go to that food dispenser, चॉकलेट्स होंगे उसमें कॉइन डालो, चॉकलेट निकालो, चॉकलेट खा लो. इट्स अ फुल मील. उसमें नट्स होते हैं, उसमें शुगर होता है, काकाओ होता है. All this contributes to your intake in the body, in terms of the body, and you will not feel hungry. काम चल जाएगा. It's emergency food, chocolates. So Schokolade ist gesundheitlich. यहाँ पे die Geschichte der Schokolade, number 3 पे. Correct. Yeah. Number 4. Wer isst wie viel Schokolade? कौन कितने चॉकलेट खाता है? I write Schokolade verbrauchen in anderen Stadt. पर इतना लंबा टाइटल क्यों? Just use a simple word. Schokoladenkonsumenten. Chocolate consumers. Okay. यहाँ पे सबको चॉकलेट पसंद है? Yes. अमूल, Cadbury. Cadbury 5-star. Have you tried any of the foreign chocolates? Yes, sir. थोड़े महंगे हैं, but once in a while do try them, then you will see the difference. Lindt you should buy. Lindt, Lindt, Swiss chocolate है, महंगा है. उसमें there is a chili flavor. हल्की सी मिर्च लगती है उसमें with the sweetness. Awesome taste. हाँ, और उसी Lindt में there is a sea salt flavor. Yes. That I have. नमकीन के साथ है, मीठा नमकीन. Again, mind-blowing flavor. Mind-blowing. Lindt. Then the other one is Rittersport. Rittersport German chocolate. ये सुपर बाजार में मिलते हैं आजकल. उसमें मात्सीपान एक फ्लेवर है. मात्सीपान is made out of बादाम. बादाम को भून के उसका फिर पेस्ट बना के उसको उसमें मिलाते हैं चॉकलेट में. That भुना हुआ बादाम paste is called marzipan. It has got a slightly bitter taste. थोड़ा हल्के से बादाम थोड़ा कड़वा होता है. उसको चॉकलेट में वो कड़वेपन के साथ खाओगे, again mind blowing taste. They are very, very popular flavors. I think Rittersport ist 175 hier. Lindt etwa 240 oder 250. Die sind ein bisschen teuer. Ja, ich gebe zu. I agree. I admit. Einmal in 2 Monaten kann man dafür Geld ausgeben. Once in 2 months. एक बार तो खरीद के देखो. Yes. sehr, sehr gut die sind. तुम लोगों को मैं कुछ स्टोरीज भेजो क्या पढ़ने के लिए? Have I sent you anything?